Next is capacitance. Capacitance. So the ability of a conductor, the ability of a conductor to store electric charge. The ability of a conductor to store electric charge is called capacitance. So in general, अगर किसी कैपेसिटर को let if Q charge is given to a conductor, then its potential increases. And this potential increases by V. Let it be V. सो कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी है किसी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने के लिए. एंड इफ Q चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर, अगर हम मान लिया कि किसी कंडक्टर को Q चार्ज दिया जाए तो उसकी जो पोटेंशियल है इट इंक्रीजेस बाय V. लेट इट बी इंक्रीजेस बाय V. देन वी कैन राइट इट एज देन Q is directly proportional to V, or Q is equal to C into V. So here this C is known as capacitance. इस C को क्या बोलेंगे? Capacitance बोला जाएगा. This constant C is known as capacitance. So Q is equal to CV, or C is equal to Q upon V. C किसके इक्वलेंट है? Q upon V की. And this constant is known as capacitance. Ability to store electric charge. किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी चार्ज को स्टोर करने के लिए that is known as capacitance. कंडक्टर्स और कैपेसिटर्स, कंडक्टर्स की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी, कैपेसिटर्स की चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी नोन एज कैपेसिटेंस. सो C इज इक्वल टू Q अपॉन V. सो ध्यान देंगे किस पे ये कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करेगा किसी कंडक्टर के केस में. सो कैपेसिटेंस does not depends upon C and V. किस पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करेगा? Q and V. चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड नहीं करेगा. कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V, बट इट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर. शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर. ये कंडक्टर की शेप और साइज पे डिपेंड करेगा, ना कि डिपेंड करेगा quantity of charge Q and V. So next, capacitance does not depends upon capacitance does not depends अपॉन कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है? डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर. नेचर ऑफ
मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है, बट डिपेंड्स अपॉन medium in which conductor is placed, so ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मीडियम पे, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम in which conductor is placed. So capacitance जो है वो डिपेंड नहीं करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे, बट इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम ऑन विच दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड. So next, as C is equal to Q upon V, so its SI unit is farad. SI unit of capacitance is farad. SI unit farad. क्या है इसकी SI unit? SI unit is farad. Coulomb per volt. COLOUMB. Coulomb per volt. Farad. So स्मॉलर यूनिट्स की अगर बात करें, 1 माइक्रोफैरड इट इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरड. 1 नैनोफैरड 10⁻⁹ फैरड. एंड 1 पिकोफैरड 10⁻12 farad. So these are the units of capacitance. These are smaller units, and SI unit of capacitance is farad. Now dimensional formula of capacitance. So dimensional formula of capacitance is C, as formula is C is equal to Q upon V. So C is equal to Q as I is equal to Q upon T. So Q is equal to IT. So I ampere into time, AT upon volt. Potential V is equal to W upon charge. Work done per unit charge, W upon Q. So here is W upon Q. So AT, this Q, one more Q upon W. So you can write it as AT into AT upon W. So AT square upon W, AT square upon W. W is equal to F dot S ml2 T minus 2. So it is equivalent to m raised to power minus 1 L square L raised to power minus 2 and T raised to power minus 2. It becomes plus 2 square, 2 plus 2 4, T raised to power 4 और A raised to power minus 2. So जो डायमेंशन है कैपेसिटेंस की
it is equivalent to m minus 1 L minus 2 t raised to power 4 a minus 1 a minus 1. So C is equal to dimensional formula, C is equal to m minus 1 L minus 2 t raised to power 4 and a minus 2. So next is principle of capacitor. Principle of कैपेसिटर. सो कैपेसिटर को मोस्ट कॉमनली इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फैन और lot of gadgets, electronic gadgets. And nowadays micro capacitors are also used in memory chips of the computers. So here यहाँ पे एक कैपेसिटर है, देख सकते हैं आप, विप्रो का कैपेसिटर है ये, मेड इन इंडिया, और 2 एंड्स हैं इसके, 2 एंड्स. सो इस तरह के आपने कैपेसिटर, और जिसको कंडेंसर भी बोला जाता है, जिसको मोस्ट कॉमनली फैंस में यूज़ किया जाता है. सो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. Principle of capacitor. So let us suppose a insulating metal plate, insulating metal plate A. मान लीजिए एक मेटल प्लेट है, इंसुलेटिंग मेटल प्लेट. सो नाउ let some positive charge be given to this plate and as long as we give positive charge to this plate, its potential increases and becomes maximum at a point. So when it becomes maximum, we can't give more charge to this plate, because if we do so, then charge would leak out from this metal plate. So now we place another insulating metal plate, another insulating uncharged metal plate nearer to this insulating metal plate A. Let it be B. Then you can see, as this plate is nearer to it, it is placed surrounding to this plate A, then by conduction negative charge induces along the inner face of this metal plate B. So due to this negative charge, the potential of this insulating metal plate A decreases. So as the potential of this metal plate decreases, then you can give more positive charge from outside to increase its potential. So here positive charge is induced outer face of this metal plate B, which is equal to the charge which is induced inside
So after then we'll earth or ground this metal plate B. So when, as long as we this ground this metal plate B, we earth this metal plate V, you can see that this positive charge freely move to ground and this negative charge strongly reduces the potential of A. So again, strongly there is a reduction of potential in the insulating metal plate A. So now we can give more charge, we are able to give more positive charge to this insulating metal plate so that its potential increases. So this is the principle of capacitor. So ध्यान देंगे, नोट करेंगे साथ में थोड़ा सा. Let A be the insulating metal plate, शॉर्ट में नोट कर लेंगे थोड़ा सा. metal plate charge, then positive charge given to metal plate A. So positive charge जब metal plate को दिया गया है, then you can see that its potential increases, then potential of A increases, potential क्या होगा, increase होगा and becomes maximum, और potential becomes maximum. So जैसे ही potential maximum हो जाएगा, we can't able to give more charge. So therefore then can't able to give more charge to A as it leaks out. So ध्यान देंगे, सबसे पहले हमने क्या किया था, एक ही सिर्फ सिंगल इंसुलेटिंग मेटल प्लेट को प्लेस किया, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, और पॉजिटिव चार्ज जैसे ही हम इसको पॉजिटिव चार्ज देते गए, इसका पोटेंशियल क्या होता गया, इंक्रीज, बिकॉज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. अभी हमने पीछे स्टडी किया था. और पोटेंशियल इसका क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज़ होता चला जाएगा. अब ये पोटेंशियल एक टाइम पे मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद हम इसको मोर चार्ज नहीं दे सकते. अगर हम देंगे तो चार्ज वुड लीक आउट. सो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक अनदर इंसुलेटिंग मेटल प्लेट को कंसिडर किया गया. अनचार्ज मेटल प्लेट को जैसे हमने यहाँ पे प्लेस किया, बाय इंडक्शन के कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो गया इनर फेस ऑफ दिस मेटल प्लेट B. सो ध्यान देंगे, साथ में नोट भी करते चलेंगे स्टेप्स को. देन वी प्लेस now another insulating metal plate B is placed near insulating metal plate A. Then by induction negative charge क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को induces inner face of the induces along inner face of the metal plate B. So due to this note down please, important point. Due to this, potential of
due to this, potential of the metal plate A, इसका पोटेंशियल क्या होगा? decreases, reduced, potential of the metal plate A reduced, कितना reduce होगा? It depends upon the quantity of this insulating quantity of charge, negative charge on the insulating metal plate B. So due to this, potential of the metal plate A reduced. Now we connect metal plate B, insulating metal plate B to the ground, such that outer positive charge क्या होगा? outer positive charge freely move to ground. So due to this negative charge, इसके कारण, सो देखो उसके बाद क्या किया गया? इस प्लेट बी को ग्राउंड कर दिया गया, और ग्राउंड करने के बाद ये जो नेगेटिव चार्ज था इसने स्ट्रांगली देन नेगेटिव चार्ज ऑन बी, देन नेगेटिव चार्ज ऑन बी strongly reduces the potential of A, सो हमने देखा कि जैसे ही हमने इसको ग्राउंड किया स्ट्रांगली, अगेन इसका पोटेंशियल डिक्रीज़ हो गया, और पोटेंशियल डिक्रीज़ होने के कारण इसको हम और पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर सकते हैं, बाहर से दे सकते हैं इंसुलेटिंग मेटल प्लेट ए को. सो यू कैन राइट इट एज द कैपेसिटेंस of a conductor, capacitance of a conductor, capacitance of a conductor can be increased by placing an uncharged insulating grounded or earthed uncharged insulating earthed metal plate near it or in its surrounding. So this is all about principle of capacitor. So next is capacitance of parallel plate capacitor. Capacitance of parallel plate capacitor. Capacitance of parallel plate capacitor.
सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है देखेंगे. सपोज टू metal plates 1 and 2 such that this plus q charge is on plate 1. So as you have studied in principle of capacitor, same वही process follow होगा यहाँ पे. By induction plate 2 पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इसके अपोजिट फेज पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल इक्वली. और जैसे ही प्लेट बी को ग्राउंड किया जाएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है इट फ्लोज टू अर्थ फ्रीली. सो लेट सिग्मा, so here the charge is plus q and minus q. So surface charge density sigma, here is sigma, and let A be the area of each plate separated by distance d. Then electric field between the plates will be along this direction. So let sigma be the surface charge density, of A. Sigma be the surface charge density of A. So sigma be the surface charge density of A, then sigma, therefore sigma is equal to q upon A, and surface charge density of B. surface charge density of B क्या होगी? Sigma is equal to minus q upon A. Sigma is equal to minus q upon A. So area of each plate where A be the area of each plate. A क्या है? एरिया है each plate का. एरिया और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? Let D be the distance between the plates. D क्या है? डिस्टेंस है इन प्लेट्स के बीच का. So therefore electric field outside the yeah, you can write it as electric field to the left face, of plate A, electric field to the left face of plate 1, and right side of B is equal to, or plate 2, right side of 2, this is plate 2, is equal to 0. So देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट साइड में और इस सेकंड प्लेट के राइट साइड में इस तरफ वो क्या रहेगी? 0 होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनसाइड द टू plates. So therefore
electric field between the plates. Therefore electric field between the plates. So electric field जो है between the plates, it will be E is equal to sigma upon epsilon naught, and sigma is equal to Q upon A epsilon naught or A epsilon 0. Let this be equation number 1. Sigma upon A epsilon 0. This is the electric field between the plates. So then, therefore, potential between the plates, therefore potential between the plates, potential between the plates will be V is equal to E into distance between the plates. Simply E into distance between the plates, distance between the plates. सो ध्यान देंगे यहाँ पे जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बिटवीन वो कितना है, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू d. So V is equal to E into d. Let this be equation number 2. इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2. V is equal to E into d. So therefore capacitance C is equal to Q upon V. C is equal to Q upon V. सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, substituting the value of, therefore substituting the value of V from equation 2 in equation 3. Let this be equation number 3, that is capacitance is equal to C is equal to Q upon V. Therefore C is equal to Q upon V. So E जो हमने फाइंड किया था, क्या था वो, Q upon epsilon naught A, Q upon epsilon naught A, Q C is equal to Q upon V. So V is equal to E into D, and E जो हमने फाइंड किया था, E is equal to sigma upon Q upon A epsilon naught, है ना, Q upon A epsilon naught. सो सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे Q अपॉन V के प्लेस पे Q अपॉन A epsilon naught. So Q upon Q upon V into D. Okay, into D. E into D. V is equal to E into D, QD upon A epsilon naught. So ध्यान देंगे, सेम V एज इट इज, E की वैल्यू को हमने पुट कर दिया यहाँ पे, Q upon A epsilon naught, कैपेसिटेंस C is equal to Q upon V, और C is equal to Q upon V.
So Q cancel out with each other, and C is equal to epsilon naught A upon D. C is equal to epsilon naught A upon D. So C is equal to epsilon naught A upon D be the capacitance of parallel plate capacitor. क्या होगा वो? Capacitance of parallel plate capacitor. So note down please.